सब कुछ अच्छा रहा। बता दो दिनेश या विक्रांत। भाई टीम का नाम क्या है दूसरे वाले का? VSPK दिनेश और डेयरिंग डिविनियंस। दोनों ने ठीक है, अब आपके पास सेकंड मैच की पूरी डिटेल्स है। इम्पैक्ट प्लेयर का ध्यान रखना, ठीक है? राहुल भाई क्या करना है? मुंह वालों दो रिप्रेजेंटेटिव्स अनाउंस कर दो। नहीं ये सर अनाउंस कर देना, दोनों टीम्स के हाइलाइट्स रिप्रेजेंटेटिव्स का आ जाएंगे। उड़ा दूं राहुल भाई, उड़ा दूं भाई यहाँ से ऑन करो ना। ऑन तो है। क्या करना है? हाँ ना बोलो। चेक भाई उड़ाना भी नहीं है। आवाज उड़ा रहा हूँ। So it's a request. Representatives from both the teams, at least one of them are required here at the scorer's desk. So VSPK and Daring Divinians, kindly send in one representative from your team to scorer's desk. So it's the second game of the day. VSPK taking on Daring Divinians. The players are out there, and starting for. I think we're just waiting for the representatives from both the teams. ठीक है ना? सामने नजर होता है एक बार। अश्विनी हो जाएगा। वो आएंगे ना। So the first delivery of the game, VSPK batting first, and the batter straight away wanted a single. Slight hesitation, sent back by the non-striker. Starts with a dot. VSPK finishers, remember the champions from the previous season. And once again, the aim will be to take the trophy back home. And Daring Divinians, meanwhile, another strong team. And throughout the history of this tournament, they've been one of the strongest teams. That could be a wide. It is a wide signal by the umpire. So, first runs on the board, courtesy extras. मनीषा नहीं शर्मा। अरे यार वहाँ मनीषा शर्मा है, यहाँ पर मनीषा सैनी है। यही कर दूँ ना मैं। शर्मा ही कर। बोलना क्या सो? मैच शुरू हो गया तो और यहाँ पहला रन और मैच शुरू हो गया ना। क्या मैच का एक्शन मिस होगा? लोकेश ऑन एंड ऑफ कर लियो जितना मैच में लगते होते हैं। देखो उसको स्टिल मंगा दो, इस वाले को तो मोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो स्टिल रहेगा। ऐसा कर दे आप पूछ लो कि बाबा जी ऐसे करते हैं सेकंड पे खा दूंगा। इस वाले मैम एक कम ये हो सकता है कि उसको स्टिल कर देते हैं उसको कैमरा को, और ये उसको यहाँ पर मोड़ देते हैं, लेकिन फिर होगा कुछ रन आउट होगा। ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड यहाँ पर मिलेगी और रन्स फिलहाल आते हुए दिन का ये दूसरा मुकाबला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई टीम और वीएसपी के फिनिशर्स को मिला है पहले बल्लेबाजी का मौका और हवा में ये गेंद और यहां पर मिल गई है पहली सफलता। शुरुआती विकेट, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय और पहले ही ओवर में सही साबित होता हुआ।
हेलो 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 और यहाँ पहली सफलता मिलती हुई और पहला प्रेशर, पहला विकेट हेलो। फिनिशर्स। हेलो Can I have Frobilians Master Strokes and Royal Nav Bhartiyans here for the presentation ceremony? Can I have Mr. Himanshu here from eRobo Solutions, sir? Can I have you here? Royal Nav Bhartiyans, I request the team to kindly come near the banner for the presentation ceremony. Now both the teams, Frobilians, Master Strokes and Royal Nav Bhartiyans, please come at the flags for the presentation ceremony. eRobo Solutions. Yes, we have both the teams. Frobilians, Master Stroke, and what a match we witnessed. Firstly, we congratulate Frobilians, Master Strokes, winning this match by meager margin, 5 runs. And yes, we have our president, Mr. Sanjeev Gupta, along with our sponsor from eRobo, Mr. Himanshu. संजय जल्दी आ यार। जी हमारे फोटोग्राफर। हाँ एथलेटिसिज्म दिखाओ ना, दौड़कर भागकर। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, क्रिकेट मैच चल रहा है। Our sponsor is with us. Possible. Once again, we thank Mr. Himanshu from eRobo. And yes, now it's time for the awards. Firstly, we go with the batsman of the match. It's Amit Bhardwaj is the batsman of the match. But a super knock has been played by Amit. He made 28 runs. 55 नंबर की जर्सी, और अगली बार इतने रन से नहीं बनेगा, 28 से नहीं, 55 रन बनाना अपनी जर्सी के। यस, वी हैव अवर कैप्टन विद अस, यश एंड संजू सर। And next award goes to bowler of the match. Yes, captain himself, Yash Tyagi, being the bowler of the match. And in fact, that was a wonderful spell is being bowled by Yash. And now
And now it's time for the female player of the match. It goes to Balesh ma'am. Balesh ma'am, please come. Being the female player of the match. Indeed, well played by Ms. Balesh. And yes, next award is Star Performer. It's a new addition in this tournament. Star Performer of the match. Any guesses? Yes, in fact, it goes to the losing team. And any guesses for the Star Performer? Any guesses? Any guesses? So yes, it's Dinesh. Dinesh is the man being the Star Performer. And yes, some words from the. Yes, yes, Dinesh, कैसा लग रहा है? इस साइड पे नहीं हो, विनिंग साइड पे नहीं हो, थोड़ा लूजिंग साइड पे. हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा नहीं लग रहा सर, लेकिन कोशिश अगले मैच में पूरी करेंगे इस तरफ होने की. और अभी कुछ देर पहले जब वहाँ पे इतना सब कुछ कर रहे थे, ये हो रहा है इम्पैक्ट प्लेयर का, ये सब, ये थोड़ा सा आगे से ध्यान रखा जाए, जज्बातों पे ध्यान. So thank you Dinesh. And yes, firstly we will go to our, we will have to say our losing captain, Mr. Sanjay sir. Sir, what happened in the match? Well, first of all, I would like to congratulate the team, Yashji and his team. They played very well. My congratulations to you. And my team also played well, although we lost the match. At one time, we were on the match, and of course, but because of few mistakes, we lost the match. But this is cricket, and we accept it gracefully. And next time we'll try our level best. Our players who have been practicing for last 2 months, I must say that they tried to put in their 100%. But this is the game of cricket. Absolutely. And you never know on which day which team wins and which team lose the match. So ultimately cricket won. तो फिर सर अगले मैच के लिए क्या तैयारी रहने वाली है? Definitely, I cannot share the strategies, but I will just say, I'll just say that we will put in our 110% in the next match, which is on 5th of January. Good luck, sir. Good luck. And yes, we come to the winning captain and being the bowler of the match as well, Mr. Yash Tyagi. Sir, how are you feeling? Feeling is good. Obviously, winning feeling is always good. तो हमने हमेशा कोशिश यही करी थी पूरे उसमें कि हम सिंगल डबल जितना रोक सकें रोकें, क्योंकि हमें पता था कि बाउंड्रीज बहुत मुश्किल आनी है. एक आधी बाउंड्री आती तो आती, बट कितना भी हार्ड हिटर हो या कुछ भी हो, बॉल नहीं जा रही थी. तो सिंगल डबल्स को ही रोकने का वो था हमारा, और हमने टाइट रखी फील्डिंग की. जो डबल हो रहा था उसको सिंगल में रोक कर वही विन थी, वहीं पर विन थी हमारी. और वही बात करें तो अगर बात करें पूरे मैच में शायद 1 या 2 बाउंड्रीज आई, और लास्ट ओवर में कैसे आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ लास्ट ओवर में, काफी ड्रामा हुआ. काफ़ी कुछ हुआ, मतलब कन्फ्यूजन थी, ज़रूर थी. बाद में जो भी डिसीजन रहा वो, बट हमारे लिए अच्छा ही रहा. तो बाकी नव भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली, और मैं उन्हें ऑल द बेस्ट कहूँगा कि अच्छा खेलें और ऐसे ही चलता रहा टूर्नामेंट अच्छी तरह. Thank you, sir. What a wonderful words by winning captain. And yes, now we come to our most fittest man of this tournament, I must say, our Sanjeev sir. So first match, and everything happened in this match. It was a very tough match. ये जो मैच था, ये पूरे TCC के 6 साल में जो भी हुआ है उसको दर्शाता है. So सारी चीजें हुई, बड़ा टफ कंपटीशन, बहुत इंटरेस्टिंग मैच. लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक मैच गया, और थोड़ा बहुत जो रूल्स को लेकर के, हमारे रूल्स कुछ टफ रूल्स हैं, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दोस रूल्स. उसको लेकर के जो भी व्हाटएवर वाज देयर, बट देन एवरीथिंग एंड्स वेल इफ वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि
rules properly implement ho. So this is what we tried, that we follow the rules, and as per the rules, the best team for the day has won. And many congratulations to Yash ji for winning this match. And Sanjay ji, better luck next time. And you have definitely given your best, but then let's hope that the tournament goes on well. So thank you so much. Thank you so much. दोनों की मांग को पूरा करते हुए और दिन का ये दूसरा मुकाबला, पहला विकेट जल्द गिरा लेकिन उसकी भरपाई यहां पर पूरी तरह से करने की कोशिश करते हुए वीएसपी के फिनिशर्स। और उम्मीद यहां पर फिलहाल यही रहेगी कि जो पहले मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी वहां से थोड़ा सा सीख मिलती हुई, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सूखेगा अब और रन्स आपको देखने को मिलेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर और जरूरी भी, क्योंकि यहां से एक और झटका लगता हुआ और रन आउट। किसने फेंका वहां से? सवाल यह है कि आप किस तरह यहां से बल्लेबाजी को बरकरार रख पाते, क्योंकि लगातार अगर विकेट गिरेंगे तो परेशानियां बनेंगी। और जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया उसको अभी तक इस पावर प्ले में सही साबित किया गया है। सागर चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखे, लेकिन दूसरे छोर से एक झटका और लगता हुआ और फिलहाल 14 रन 2 विकेट 2.4 ओवर की गेंदबाजी। और लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने देखना रहेगा यहां से किस तरह बल्लेबाजी होती है। 2 गेंदें अभी इस ओवर से आना बाकी है। 7 गेंदों में 8 रन पावर प्ले का ये समय। कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा सा यहां पर जो गेंद की लाइन थी उसको कवर करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मौके पर एक बार फिर अपना जो शॉट सिलेक्शन है उसको तब्दील किया, लेकिन सिंगल यहां जरूर मिलेगा। और सिंगल्स डबल्स के साथ फिलहाल लगातार रन आते हुए केवल 5 रन और 1 विकेट। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहां से। आखिरी गेंद, रिचा मैम होंगे स्ट्राइक पर और देखना रहेगा यहां से किस तरह से क्या टारगेट लेकर चलते, क्योंकि जिस तरह पहला मुकाबला हुआ था उसमें बाउंड्रीज का जो इंतजार था वो लगातार बढ़ता गया और इस बार मिस हुआ है। गेंद सिंगल चाहते थे और फिलहाल यहाँ नो बॉल और नहीं आउट दिया है। आउट कौन हुआ? रन आउट हुई है, क्या हुआ? और यहाँ एक और विकेट 9 बॉल पर। कैसे आउट दिया? रन आउट देंगे फिर देंगे। हेलो पेनल्टी का भी हो सकता है मेरे को लग रहा है। नहीं, पेनल्टी में आउट नहीं है कोई। ये क्या आउट, रन आउट हुआ है? रन आउट फील्डर नेम कौन था भाई? किसने मारा? कीपर ही डाल दे। कीपर नहीं मारा बस डायरेक्ट। द्रौपदी थ्रो कीपर नहीं मारा। कोई दिक्कत नहीं। द्रौपदी अरे वो सागर भाई बस बहुत हो लिया। आया कौन है? लविश का नंबर क्या? तो 3 ओवर 15 रन और 3 विकेट। तो गेंदबाजी का जो फिलहाल यहां पर निर्णय था वो सही साबित होता हुआ फिनिशर्स के खिलाफ। दबाव जरूर रहेगा क्योंकि आप जिस गति के साथ रन चाह रहे थे उस गति के साथ रन आए नहीं है, लेकिन दूसरे छोर से लगातार गिरते हुए विकेट और परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती हुई। 12 ओवर का ये मुकाबला है और सवाल यह है कि आप लक्ष्य किस तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी तक बॉल को लेकर ही हो गया भाई। 15 रन 3 ओवर 3 विकेट। 3 ओवर 15 रन और थोड़ा सा डिस्कशन आप देखेंगे यहाँ एम्पायर्स, क्योंकि जो बल्लेबाज हैं वो थोड़े से नाखुश नजर आते हुए गेंद से और
शायद उसी बात को लेकर शायद यहाँ पर इस समय चर्चा चलती है, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि ये सीजन 6 का दूसरा मुकाबला है और हर कोई टीम चाहेगी कि अपना पहला मुकाबला जीते और टॉप पोजीशंस में, टॉप 4 में फिलहाल अपनी जगह को 15-3 ओवर। कैसे हो? ठीक हो? सवाल ये कि आप किस तरह से रोटेट करते हैं पारी को, क्योंकि अब जिस तरह आप चाह रहे थे उस तरह का स्टार्ट मिला नहीं है। विकेट गिरे हैं और इन गिरते हुए विकेटों के बाद साथ निभाने के लिए दूसरे छोर पर आपको उसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए जिस तरह और जिस लय में आप बल्लेबाजी को बरकरार रखे हुए हैं। 9 रन 8 गेंदें नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और लविश फिलहाल नए बल्लेबाज, और इस समय टीम को जरूरत, फिनिशर्स को जरूरत एक साझेदारी की, ना केवल साझेदारी बल्कि कुछ तेज तर्रार रनों की, क्योंकि इस पिच पर, इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा टोटल, एक अच्छा टारगेट देना बहुत ज्यादा जरूरी था कि आप जब चेज के लिए दूसरी टीम को आमंत्रण दे तो आपके गेंदबाजों के पास वो अमाउंट होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होता हुआ और स्कोर बोर्ड में 9 बॉल थी, उस पर रन आउट हुए। 16 रन बोर्ड पर 2.5 ओवर की गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर अच्छा बल्ला घुमाया है, लेकिन एक रन और रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर, और थोड़ा सा अगर थ्रो सही सटीक होता तो शायद यहां परेशानी बन सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और इसी के साथ 3 ओवर आखिरकार यहां पर पूरे होते हुए। 3 ओवर 18 रन 3 विकेट। इन दोनों ही बल्लेबाजों पर निर्भर करेगा यहां से फिनिशर्स की पारी को किस तरह से वो एंड करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास लगभग जो समय है वो काफी है और विकेट भले ही आपने गंवाए हो। 2 ऐसे बल्लेबाज जो मैदान के चारों तरफ रन बटोर सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। नया बॉल है, अगले 3 ओवर अच्छे से बल्ले पर आएगा भी, और जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्पॉट्स पिक कीजिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को समझिए और उसी के लिहाज से, उसी एक गेम प्लान के लिहाज से यहाँ पर जो बल्लेबाजी उसको बरकरार रखना होगा, क्योंकि आपको गति चाहिए और गेंदबाज क्या आपको यहाँ उतनी मुकम्मल गति दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि बाउंड्रीज ज्यादा देखने को मिली नहीं है, गैप आपको तलाशने होंगे। पावर प्ले का ये समय है। 18 रन बोर्ड पर 3 विकेट से आगे बढ़ती हुई यहाँ से फिनिशर्स, और तरुण फिलहाल चौथा ओवर लेकर यहां से चलेंगे और देखना रहेगा। ये दिन का दूसरा मुकाबला है। 12-12 ओवर हर एक टीम को खेलने हैं। 3 ओवर आप खेल चुके हैं, महज 18 रन बोर्ड पर हैं। गिरते हुए विकेटों के बीच एक साझेदारी की उम्मीद। क्या गेम प्लान यहां से रह सकता है? अगर प्रोजेक्ट स्कोर पर नजर डालेंगे तो 70-72 रन पर निर्धारित 12 ओवर बल्लेबाजी हो पाती है और इसी लय के साथ। लेकिन सवाल है कि आप कितने रन जोड़ पाएंगे। अगले 4 या 5 ओवर की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों को, और जो गति चाहिए। पटका हुआ है गेंद, बैकफुट पर अच्छा शॉट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरे रन की मांग, थोड़ा सा हेजिटेशन, लेकिन अगर थ्रो सही होता तो फिर से वही सवाल, कॉल्स करनी होगी, आपको देखना होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर फिनिशर्स की पारी है कि यहां से एक भी विकेट का नुकसान जो है आपको बैकफुट पर लेकर जा सकता है। और 2 ऐसे बल्लेबाज जो आपकी बल्लेबाजी की मध्य क्रम की खासकर रीड माने जाएं तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताना जरूरी होता हुआ। और मिसफील्ड एक बार फिर, लेकिन इस बार कोशिश की कि थोड़ा सा करीब जाकर उस गेंद को थ्रो किया जाए। और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहां से जितना समय आप बिताएंगे ना उतना ज्यादा आप विपक्षी टीम पर दबाव बना पाएंगे। बार फिर से कलाइयों के सारे खेलना चाहते थे। डाउन द लेग साइड ये गेंद, ओवर थ्रो।
रनिंग देखनी होगी यहाँ पर कितनी बेहतर हो पाती है, क्योंकि आप चार्ज अप होना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं विपक्षी टीम पर, और विपक्षी टीम के लिए ज़रूरी होगा ये इस तरह की जो अतिरिक्त रन है इन पर अगर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, खासकर मिडफील्ड गेंद भी दोबारा डालनी है, और 3 रन भी आपने विपक्षी टीम के खाते में डाल दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 24-3 विकेट के नुकसान पर। फिनिशर्स की पारी फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ती हुई अच्छे रिदम के साथ अभी तक गेंदबाजी हुई है। पिछली 2 गेंदें अगर देखेंगे, इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त कुछ करने की कोशिश, थोड़ा आगे रखने की कोशिश तरुण की, जिसके चलते लेग स्टंप पर एक बार फिर आगे की तरफ गेंद, अच्छी गेंद एक बार फिर। ये जो सर पर हाथ रखे हैं ना, ये बताते हैं कि कितना करीब से निकला है वो गेंद। और कई बार होता है कि आप चेक करना चाहते हैं ना गेंदबाज को कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्पीड है, किस तरह से वो बल्लेबाज को पढ़ रहा है। और अब सवाल है बल्लेबाज के ऊपर, पिछली गेंद पर बेट हुए हैं, क्या यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा सरप्राइज करेंगे, क्या यहाँ से अगली गेंद शॉर्ट होगी। और ये रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां से अगर आड़ा तिरछा बल्ला होता ना, अगर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की होती तो वो गेंद मिस होते, स्टंप पर जाकर लगती, और जानते हैं इस चीज को। और ये दर्शाता है, ये अवेयरनेस है दोनों ही खिलाड़ियों की, दोनों ही बल्लेबाजों की। जितना ज्यादा आप बात करेंगे ना, क्योंकि दूसरे एंड पर जो खिलाड़ी खड़ा है, जो बैट्समैन खड़ा है, वो आपको ज्यादा क्लोजली देखता है और वो बताता है कि आप का स्टांप्स किधर है, आप किस तरफ किस गेंद को पहुंचा सकते हैं। लो फुल टॉस, चिप किया उस गेंद को, और पहला रन तेजी से लेने के बाद ये दबाव बनाता है फील्डर्स के ऊपर, क्योंकि अगर वहां हल्का सा वो मिसफील्ड होता तो दूसरे एंड से सागर वापस आ सकते थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन सिंगल यहां पर आया और एक अच्छा ओवर फिलहाल यहां से घटता हुआ। 7 रन इस ओवर से आए हैं। 25 रन बोर्ड पर, 3 विकेट का हुआ है नुकसान। 3.5 ओवर की वो गेंदबाजी, आखिरी गेंद इस ओवर से। फिर से खींचा हुआ वो गेंद, और कलाइयों के सहारे खेलना चाहते थे लेकिन जगह उतनी मिली नहीं। एक बार फिर से दूसरे रंग की मांग और वापस भेजते हुए, और इसी के साथ एक और सफल ओवर समाप्त होता है। फिनिशर्स के लिए आए हैं 8 रन 4 ओवर के बाद। स्कोर पहुंचा है 26-3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी पे सिंगल आया भाई, एक बार टोटल बता दे कितना हो गया। 26 हो गया ना। तो फिलहाल यहाँ जो बल्लेबाजी हुई है वो बेहतर हुई है, क्योंकि आपने गेम की नजाकत को समझा, खेल की रिक्वायरमेंट को आप समझते हुए फिलहाल लोवेश और सागर की ये जो जोड़ी है, फिनिशर्स की जो पारी फिलहाल थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये मुकाबला जो है, पारी जो है वो 12 ओवर्स की है। आप 4 ओवर खेल चुके हैं, 8 ओवर आपके पास हैं, 7 विकेट अकाउंट में, लेकिन स्कोर केवल 26। और कप्तान किस तरह से रोटेट करते हैं, क्योंकि अभी तक सम्मान दिया इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, थोड़ा सा समय लेते हुए, लेकिन ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगले 4 ओवर चाहेंगे कुछ तेज तर्रार रन्स आप बोर्ड पर लगाएं। आसान होने वाला है नहीं, बल्ले पर आसानी से गेंद आ जरूर रहा है, लेकिन उस गति से जा नहीं रहा है जिस गति से, जिस की उम्मीद बल्लेबाज अक्सर करता है कुछ बड़े शॉट्स या बाउंड्रीज के लिए। कुछ अलग करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशंस में, इस तरह के मुकाबले या इस तरह के मैदान पर किस तरह बल्लेबाजी होती है। और स्पिन गेंदबाज क्या यहाँ से देखेंगे, पटका हुआ गेंद आधे पिच से पहले, और 15 बंडल लगी हुई है, 40 बंडल का मंगाया था। कितने का मंगाया? 15 ही तो गए थे, 25 तो रह रहे हैं अभी। ठीक है, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ला घुमाने की कोशिश एक बार फिर मिस होती हुई, और वो जो एंगल बनता है ना, पड़कर गेंद बाहर को निकलती है, चाहे वो लेदर की हो या फिर टेनिस बॉल हो, तो एक एरिया बनता है और उस एरिया पर प्रहार करने की कोशिश, थोड़ा सा नीचे रहा वो गेंद। और जिस तरह से मैंने बात की थी कि एक
दूसरे एंगल पर, दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जब आपका पार्टनर खड़ा होना तो वो अच्छे से आपकी बल्लेबाजी को देख पाता है कि कहां सर गिर रहा है, कहां पैर है आपका। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर इस बार कनेक्शन हुआ है, लेकिन टाइमिंग उतना बेहतर नहीं। दूसरे रन की जरूर मांग होनी चाहिए और पूरी तरह से यहां पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और ये प्रेशर बनाते हुए इस साझेदारी को जितना जल्द तोड़ पाएगी टीम उतना ज्यादा आसान होगा, वरना फिनिशर्स एक अच्छे स्कोर की तरफ यहां से बढ़ेंगे क्योंकि बाउंड्रीज आ नहीं रही है। सिंगल्स डबल्स के साथ ही एक मात्र ऐसा सहारा, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, गैप्स अच्छी गेंदबाजी यहां पर जरूरी होती है क्योंकि आप पूरी तरह से चाहेंगे यहां कि कम से कम जो आंकड़ा है, कम से कम जो 12 ओवर की जो बल्लेबाजी आपने मौका दिया है विपक्षी टीम को, उसको कम से कम स्कोर पर रोक सकें। और आने वाले बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर फिनिशर्स के लिए ये दोनों ही खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहेंगे जिस पर आने के बाद आप जो बल्लेबाज हो अपना नेचुरल खेल, यहाँ पर नेचुरल बल्लेबाजी को बरकरार रखने जो अनुभव है वो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर गैप में दे है इस गेंद को, टाइमिंग उतना बेहतर हुआ है लेकिन आउटफील्ड उतना बेहतर है नहीं। और यहाँ तीसरे रन की मांग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा चार्ज किया कीपर ने लेकिन उसके बावजूद 3 रन, बहुमूल्य 3 रन। और इसी तरह से आप दबाव बना सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत, क्योंकि एक एक रन की अहमियत बढ़ती जाएगी यहाँ से। और जब आप चेस करने उतरेंगे ना तो वो हर एक रन आपको चेस करते हुए परेशानी डालेगा। एक बार फिर से बढ़िया सोच, हल्के हाथों से खेला उस गेंद को कवच की दिशा में और 1 रन और यहाँ से आता हुआ। तो थोड़ा सा महंगा ओवर आप कह सकते हैं, अभी भी यहाँ 2 गेंदों का आना बाकी है। 34 रन बोर्ड पर है, 8 रन इस ओवर से आ चुके हैं, 2 गेंदें अभी बची हैं। ग्राउंड बड़ा है, गैप्स आपको ढूंढने होंगे, जो आपकी टेक्निक है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस बार हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अच्छा शॉट, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में। बाउंड्रीज की पूरी कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन और जोर लगाना होगा यहाँ पर और थोड़ा सा बाजों की ताकत दिखानी हो। एक बार फिर आगे की तरफ, एक बार फिर से अच्छा शॉट, बल्ले के नीचे वो गेंद, लेकिन रिजल्ट सिंगल के साथ होगा समाप्त। यानी 5 ओवर फिलहाल यहां पर पूरे होते हुए 5 ओवर के बाद फिनिशर्स पहुंचे हैं 36-3 विकेट के नुकसान पर। पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खट्टर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओ गोविंदों में। जब ऐसा आज निकले फूल के आज बिखरे, मनमानी ऐसी हो मचल के बोली, दस है ना दस है की जिद है तो जिद है, किसना यूं ही किसना यूं ही तुम बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। सर 5 ओवर 36-3 विकेट के नुकसान पर मुकाबला फिलहाल यहां से आगे बढ़ता हुआ। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन और एक मौका यहां
इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, फिनिशर्स के लिए फिलहाल ये साझेदारी किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या गेम प्लान रहने वाला है। टॉस जीता पहले गेंदबाजी, शुरुआती विकेट आप हासिल करना चाहते थे, आपको मिले हैं, लेकिन यहां से गेम प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन क्या यहां पर बी इंपॉक्स किया जाएगा, क्योंकि इस समय ये दोनों बल्लेबाज परेशानी का फिलहाल यहां से दबाव बनाते हुए, क्योंकि ये जितनी देर मैदान पर रहेंगे उतना आसान होता जाएगा फिनिशर्स के आने वाले बल्लेबाजों के लिए आकर केवल अपने स्ट्रोक्स खेलना और परेशानी बढ़ाना गेंदबाजी कर रही टीम के लिए। आप शुरुआत जिस तरह से चाहते थे बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, बतौर गेंदबाज, टॉस जीता, उस निर्णय को पूरी तरह से सही साबित किया। लेकिन अब आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई है। अगले 3 या 4 ओवर डाउन द लेग साइड वो गेंद गैप में निकाला है, दिशा से भटके जरूर, लेकिन क्या ये गेंद जाएगा बाउंड्री तक? जी हां जाएगा, और काफी देर बाद एक बाउंड्री यहां पर मिलती हुई, और इस बाउंड्री से थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा यहां पर इन दोनों ही खिलाड़ियों का, क्योंकि ये एक चुनौती साबित करते हुए एक टफ कंपटीशन इस समय फिनिशर्स के ये दोनों ही बल्लेबाज देते हुए चैलेंजिंग मूवमेंट इस मुकाबले का, और टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं यहां से, क्योंकि अगर अगले 3-4 ओवर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने मन मुताबिक अगर बल्लेबाजी को जारी रखा और मैदान पर इसी तरह से रन आते रहे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि लगभग 7.5 रन के करीब के करंट रन रेट से रन आते हुए, और 12 ओवर का ये मुकाबला है। एक बार फिर से थोड़ा सा यहां पर बैक करना होगा खुद को, कदमों का इस्तेमाल, बल्ला घुमाया जरूर लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, और थोड़ा सा समय लेना होगा। जो गति आपको चाहिए ना, खासकर ओवर द बॉलर हेड खेलने की, वो गति उतनी मिल नहीं रही है, और मजबूर करते हुए यहां पर फिनिशर्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि थोड़ा सा लैप पकड़ते हुए 19 रन 16 बॉल में सागर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर लोविश बाउंड्री की मदद से 10 रन। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट, गैप में ये गेंद है, पहला रन तेजी से, दूसरे की मांग, मिसफील्ड के चलते मिलेंगे दूसरा रन यहां पर, और ये रन रोकने होंगे आपको, ये रन्स रोकने होंगे। ये जो अतिरिक्त रन्स है ना, ये एक एक रन की अहमियत बढ़ जाएगी आपके लिए, क्योंकि इतना आसान है नहीं इस मुकाबले में, इस मैच में, इस पिच पर आपका विश्वास, आपका एक्सपीरियंस, आपका होमवर्क, आप कितने अवेयर हैं अपने खेल को लेकर, अपनी बल्लेबाजी को लेकर, अपनी गेंदबाजी को लेकर, ये दर्शाता हुआ, क्योंकि पहले मैच में भी काफी मुश्किलात आई थी। एक बार फिर से काफी शॉर्ट गेंद वो, लेकिन एक ही रन यहां पर मिलेगा, और एक अच्छा खासा गैप है। अगर आप देखेंगे यहां पर मौका बनता हुआ रन आउट का, लेकिन वापस सही समय पर फिलहाल बैकअप आप कह सकते हैं, थोड़ा सा बैक किया है यहां से फिनिशर्स के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 44, 3 विकेट, आखिरी गेंद इस ओवर से आना अभी बाकी, दबाव जरूर कहेंगे आप, क्योंकि 7 से ज्यादा यानी लगभग 7.5 रन प्रति ओवर इस समय रन आते हुए, और ये परेशानी बना सकता है। एक बार फिर से हल्का सा पीछे हटकर अच्छा शॉट खेला है गैप में, पहला रन तेजी से, एक बार फिर से दूसरे की मांग, क्या यहां मौका बनेगा? जी नहीं, थोड़ा सा जोर लगाना होगा, खासकर जब आप बाउंड्री के करीब से थ्रो करते हैं तो थोड़ा सा बाजुएं उसमें आपकी ताकत जरूरी होती है। फिलहाल इस बीच एक अच्छा ओवर फिलहाल यहां से समाप्त होता हुआ, इस ओवर को बेहतर तरह से खेला है। 6 ओवर के बाद 46, a loss of 3 wicket, finishers. So at the halfway mark of VSPK, they're 46 for 3, and after that initial stutter, they're going along nicely. Sagar batting on 22, and Lavish is out there batting on 12, giving him good support. So, क्या चाहिए? यार तुम्हें सिर्फ क्लिक ही तो करना है। पैसा भूखा
लंच ब्रेक में खाते हैं 46 अरे भैया दोनों ही गैप हो गए थे क्या बात होगी प्यार मोहब्बत की बातें तुझे क्या बताया चंडीगढ़ से आया ना दिल्ली लगा उसका जैसे मिलने के लिए आया ऐसा वाला तो नहीं होता पावर प्ले हो रहा है तो बोल दो कम से कम भाई पावर मेरे को नहीं पता अरे बोलो मैं कह रहा हूँ क्या बोल मैं नहीं बोल पता है जिस चीज का पता नहीं उसका बोल के क्या बोल दो पावर प्ले ना बोल रहा हूँ भाई So VSPK still have 6 overs to go about their business. And they believe that they've recovered nicely at the moment. So 5 bowlers have been used so far. So VSPK 46 for 3 at the moment. 4 runs shy of their 50-run mark. And Tarun meanwhile ready to run in. He'll be bowling his second, gave away 8 runs in his first. And Sagar is the man on strike. He's batted beautifully, batting on 22. Has looked in good rhythm. Once. That's a misfield. That might trickle away for a 4. It does. Another boundary and 50 up for VSPK with that boundary. 50 up in style. That was smashed hard. Jersey number 7 got to it quickly. But I reckon it was a case of a bad bounce. 4 more runs. And looking by how both the teams fared in the first game, I think it's going to be another low scoring affair. And sometimes, you know, if you ask me, these low scoring affairs are really interesting. It makes up for all the excitement that's been the essence of this tournament. And I can vouch for the fact that we will see the 3-figure mark as the games progress. Meanwhile, a wide ball by Tarun. That's down the leg side, just losing his radar there, bowling down the leg side. We'll have to re-bowl that one. Sagar is batting on 26 at the moment. Tarun bowling his second over into the 7th over, and VSPK really, were rocked hard. Their talismanic batsman, the skipper Kapil, departed pretty early. That's another good-looking stroke all along the ground. There's a fielder at extra cover. Keeps it down to just 1. Good fielding that. VSPK, the run rate is pretty solid. It's hovering around 8.5, just a tad below 8.5 at the moment. Exceptional fielding. Exceptional fielding in his own follow-through. Tarun, the bowler. One thing is for sure, he generates some good speeds. Does Tarun. And when he gets his act together, then he's a menace to the opposition. Tarun again steaming in. Swings it hard, swings it straight. That's in the gap. That's running away towards the boundary ropes. That could be 4. It is 4. So Lavish gets a boundary, moves to 16. That was a very good hit. A full toss delivery. And just leans into that stroke. And the placement was perfect. Had to reach out for it. 4 more runs. VSPK moving along nicely. That's good cricket. Just tucks it away towards the onside. Gets a single. Got a boundary the previous delivery. Now gets a single. And gets a non-striker back on strike. Sagar batting on 27 will be facing the final delivery of the 7th over. And what a partnership this has been. They've gelled together very well. And they're going along nicely. Final delivery of the 7th.
Tarun steaming in. Just losing his run up there. Will have to reload. He's not happy with something, it seems. So Tarun ready to run in once again on top of his bowling mark. Sagar will be facing the final delivery of the 7th. That's in the air. That's aerial. Oh, I think she slipped there. Or rather, jersey number 15. She was on the prowl and was going for the catch. I think unfortunately she slipped there. Just lost her footing. And the batsman gets away with that one. 7th over gone. VSPK, they're 58 for 3 after the end of the 7th. मतलब एक जन्म से तो दुनिया परेशान चल रही, तुम दूसरे लोग आ रहे हो उसे। राहुल भाई तो सब में आ गए, बोल के मारे मनी मनी मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी थोड़ी हुई है। So VSPK moving along nicely. They're 58 for 3 at the moment. And that's a good shot. That's pulled away into the gap. A couple of bounces and into the boundary ropes. 4 more runs. And them ensuring that every now and then there's a boundary coming along their way. Sagar moves into the 30s. And what a knock he's playing at the moment. Shorter in length, and he knew where exactly the gap was. Waits for it, transfers his weight, rocks back onto the back foot. And 4 more. What a way to start a fresh new over. That's heaved away right into the gap. The fielder does well, but misfield. That's 4 more. Back-to-back boundaries for the batting team. And this is where VSPK is so dangerous. They were pushed to the wall and they come back into the game fighting. They lost their most prolific batsman in the opening over. And look how things have turned around for them. The playing 11, all of them, slide misfield again. They should come back for the second, and they do. And that's exactly what they do. That is why they are champions. They put the pressure on the opposition. They are always at it, always switched on. Again, smokes it through the offside. There is protection this time. Good fielding, keeps it down to just 1. In fact, they come back for the second. Once again, a brilliant running between the wickets. The calling has been immaculate. Once again, plays it all along the carpet. Will only be a single this time around. Keeps it down to just 1. This is already a big over for the batting team. Vishal has been expensive this over. 13 runs coming off it already. Final delivery to go. 71 for 3 VSPK. That's good cricket. That's smart cricket. I thought he was about to take a single, but the bowler does well. Quickly gets to it, make sure that they don't even think about a single. That's the end of the 8th. A good over for the batting team, VSPK. They are 71 for 3. And both of these batsmen, they're looking dangerous at the moment. Sagar batting on 41 of just 26. Look at that strike rate. And Lavish has been a good foil for him, batting on 17 of 13. So Lavish will be the man on strike facing the first delivery of the 9th over. Lavish batting on 17 at the moment. They're going along nicely. The run rate has gone up since the last couple of overs.
Rather, it's Sagar, the man on strike. Sagar batting on 41, approaching a personal milestone here. The bowler coming around the wicket. That's a big shot. That is a massive shot. But the fielder does exceptionally well to get to it. But that's been put down. I'll tell you what, that was a very difficult catch. But he's made the effort to get to it. Does really well. It's never easy, those catches. At almost a country mile to get to the ball. It does well to get to it. Puts it down in the end. Would have been a brilliant one if he had held on to that one. That's once again hit really hard. Will only be a single. Keeps it down to just one. Jersey number 15. Daring Divinians, one thing is for sure, that the fielding has been electric. No matter what. That's a biggie. Has that traveled the distance? Not quite. Not quite. The fielder tidies it up, keeps it to 2 once again. So another brace. So they're trying. They're looking for the big shots, but they're not really getting a move on here. And that's something that batsmen throughout the morning have struggled with. They haven't quite got their timing right. Rajesh is into his second. And the run rate is going along nicely. They're motoring away here. Sensible, just lets it go. He thought that the umpire might signal it as a wide, but he was unmoved. The umpire just within the tram line. So thoughtful bowling there by Rajesh. The penultimate delivery of the 9th over. That's Ariel. Gets away with that one. Falls safe. Another single. Moves to 20 does Lavish. Sagar will be facing the final delivery of the 9th over. Rajesh bowling. The final delivery of the 9th. VSPK looking strong here. They lost 3 quick wickets. But now this partnership holding them in good stead. We'll get a single and we'll keep strike. That's the end of the 9th. Another decent over for the batting team. There's 78 for 3 VSPK. इंसान पजल हो जाता है कि उसको 5 मिनट मार में मिलेगा सर ये हमारे बैकअप पे कैमरे का चाहिए पागल बन गए कि So, Sanjay sir is the observer of the next game. I request Sanjay sir to please turn up to the commentator's desk. We are ready for the toss. So, Sanjay sir, if we could have you as an observer for the next game coming up.
Meanwhile, Ashwini is bowling his second, bowling the 10th over. VSPK once again. The running has been electric between the wickets. They come back for another 2. And Sagar, meanwhile, is motoring along nicely, has steadied the ship, and now is picking up the pace, is upping the ante. Ashwini bowling the 10th, swings it hard towards the onside that's in the gap, but won't get a boundary. The fielder quickly gets to it, keeps it down to just a single. One more run added to the total. The score moves to 81. And VSPK, full credits to them. You know, we all know they're champion material. And generally you see teams relying too much on a few of their batsmen or a few of their bowlers. But VSPK are such an all-round team. Looks to work it away towards the deep square leg region. Doesn't make any connection. Gets another single, one more run. So what I was coming to is that the whole squad of VSPK, they believe in themselves, and whenever the team requires them, they put their hands up and they do their contribution in their own ways. Ashwini continues, swings it hard, misses it, all ends up. Good bowling. He's varying his pace. And the batsman is all at sea at the moment. Once again looking for that sweep shot. Sagar fails to connect. Ashwini is bowling splendidly here. 2 more deliveries to go in this 10th over. After this, just 2 more to go. I think they'd be disappointed if they don't get to that 3-figure mark. VSPK makes connection this time around. But there is protection. There's a fielder coming in. They come back for the second. Takes on the fielder's arm, and that would be 50 for Sagar. 50 of just 33 delivery, laced with 3 boundaries. And what an innings this has been. Wonderful half century for Sagar. And that's exactly what his team expects of him. A difficult situation, comes in, scores the runs, and now he's got a task to do. And that is to finish things off well. Gets another brace, another good over. 10th over gone. VSPK, they're 87 for 3 with 2 more overs to go in this innings. And the question is, how many more runs can they get on the board?
So 2 more overs to go. 87 for 3 VSPK. And as I said, a 3-figure mark looks to be on the cards here. I think this is already a strong total that VSPK have put on the board. Sagar is the man on strike. Or is he? I think it's Lavish who's on strike. So, start of the penultimate over. 12 legal deliveries remain. And 2 set batsmen are out there. Once again, the batsman takes it on the full, hits it straight towards mid-off rather. It's just a single, 1 more run taken. Lavish moves to 22. And he's been an ideal foil for Sagar. Has played the role of second fiddle. But he's played his role to perfection. So the bowler coming around the wicket. Vishal is the man bowling his third. And Sagar, you can sense that he's preferred that offside, especially towards that sweeper cover region, and he comes back for second. That's testament of the man's stamina. He's come back for another brace, and he hasn't broken a sweat so far. Goes to play the switch hit, and what a shot! That is classy stuff. That's something you won't see often here. And he's made sweet connection on that one. 4 more runs. It's unconventional, but doesn't matter how your runs come. You don't always need to go by the book. It's another boundary, just short of the boundary ropes. A couple of bounces and 4 more runs. That's an effective stroke by Sagar. Moves to 58. Goes for it once again. Could be a run out at the non-striker's end. He's made it back. In the end, safe. The batsman. So the bowler will continue. Once again, advances down the track. Goes towards mid-off. They'll come back for another brace. Another 2. This is a brilliant running between the wickets. The score moves to 96. They are approaching the 3-figure mark here. Final delivery of the 11th over. That's high. That's aerial. The fielder positions himself underneath that one. Has he taken it? Yes, he has. And he makes it look pretty comfortable in the end. That's a big wicket. The big fish has to depart. And Sagar, after that effective knock, has to walk back. But I believe he's done his job. That went miles high in the air. And that's a wicket finally.
खाली आड़ती है सारी के सारी आड़ो कुछ नहीं तो बोलते भाई फालतू को ट्रैक मत करो ये लोग वैसे हैं ये लोग ढंग का काम कर सकते ऐसा नहीं है लेकिन सोच वैसी है ना तुम साले फिर यही रह जाएंगे पूरी पूरी जिंदगी झगड़ने झगड़ने और ऊपर जा सकते ऊपर जाओ ना यार क्यों फालतू तू बड़ा ना जा तू बड़ा बन ले जा तू बड़ा जा अपना काम कर So the new batter is Ambika, and she would be at the non-strikers end though, because the batsman was dismissed off the final delivery of the 11th over. And Lavish is the man on strike, swings it hard towards the onside. He will think about a second, and he decides against it. That could be a wicket. I think it is a run out and a short run as well. Ambika wanted a second there, and immediately she has to walk back without facing a single delivery. So the batsman at number 6 walks out. He'll be facing Tarun, bowling the final over. Once again looks to swing it away towards the onside. Tarun really bending his back, getting some extra bit of bounce as well. So a single. Kamal moves to the non-strikers end, gets a single courtesy leg buys. So they've lost half their side rather. Kamal walks in at number 7 rather. So VSPK have 4 deliveries remaining. Well, that will be a wide. We'll have to re-bowl that one. Will be a wide, and they come back for the second. He makes it 100 up for VSPK. The 3-figure mark up for the team. And they'd be pretty happy with that effort. I think that this is already a fighting total. 101 for 5 VSPK. Lavish is the man on strike. 4 deliveries to go. And Tarun generally, he's so good with his line in length. Swings it hard, hits it straight. That's in the gap. Should be an easy 2. It is an easy 2. So Lavish providing the finishing touches to this innings of VSPK. 103 for 5 at the moment. 3 more deliveries to go in this 12th over. How many more runs can they get? That is a real question. He looks... Has he hurt himself there? हल्का म्यूजिक डाल दे भाई अजय हल्का म्यूजिक डाल तो भाई देख रहा हूँ पूछते जाता हूँ चाय देनी चाय मिली नहीं तू करेगा अंपायरिंग हो रहा करेगा वहीं पे कापे लेकर खड़ा रही हो अंपायरिंग में करता रही हो उसके गड्ढे मार रहा हूँ So we're ready to resume. Lavish is back on his feet, and his team would be hoping that he can swing it hard like that. Doesn't make any connection, but they will sneak in a single. That will be buys. Another runner added to the total, and the score moves to 104 for 5. And Kamal, the new man, has faced just 1 delivery. He's got 2 deliveries to make it count. Can he get a big hit in?
makes the connection, but couldn't quite get underneath that one. I think they will once again come back for a brace. And that really shows you that the running between the wickets has been exceptional. Final delivery of the innings coming up. And Divinians, they'd be really looking at what kind of a total they'd be chasing. This is already a big total, but it's not impossible. They have a very strong batting lineup as well. Final delivery of the innings. Goes hard. That's through cow corner. The fielder gets underneath that one. Just over his head. And they come back for 2. So a couple of runs, and in fact, they will attempt a third here, but not to be. That's a run out. So 2 runs coming off it. 108 is what VSPK have on the board, which means that the Divinians will have to chase down 109 in their quota of 12 overs, and we're expecting a wonderful run chase. Should be an interesting contest, this one. Because remember, Divinians have a mighty batting lineup, but VSPK have got a well-rounded bowling attack as well. Should be some contest, this. देख लेता हूँ मनना भाई मनना 25 नंबर कोई बात नहीं, हम बिल दे देंगे जीएसटी। बॉलर नहीं भी रहा है तरुण ने 12 नंबर 108 108 का टारगेट 109 का टारगेट। हाँ 109 का टारगेट। एक आध तो बोली खा लेता बैठा बैठा। अजय बड़ा म्यूजिक डाल दे यार, खाली है घेर दिया कर। क्या दिक्कत है इस बॉल में? लाओ ना बॉल में साइन मार। कमेंटेटर की तरह ऑडियो में सामान लेना हो क्या चाहिए? कोई ब्रेक नहीं है अभी। चलो क्या करना है? टॉयलेट जाना है? नीरज से पूछ रहा था। Can I have the teams LPS Euphorians and Indian Sunrisers near the banner for the toss? Can I have both the teams, the Indian Sunrisers and LPS Euphorians near the banner for the toss? चलता रहता है। वो करेगा क्या? बेचारा भूखा बैठा है अंदर। और जो गुरुदेव वाली बढ़िया बच गई दो, एक बार तो बच गई बोल लगने से। चाय वाय तो क्या दिन में? अरे अब तो कुछ आया नहीं, खाली क्या पकड़ा के वो ठंडी पकड़ा जा रहा था। तो मगर ठंडी मारना भी कर सकती है वो ले करना तो वो बढ़िया है हमारा वाला किताबती चला जो अमर की सैंडविच वैंडविच दिन निकलते सैंडविच मारो 5-7 फिर पेटीज है भाई। हरी बावली वालों को फोन करो, टूर्नामेंट करवाओ उनका। भाई उनको कोई मतलब नहीं है राहुल भाई, ऐसे टूर्नामेंट पकड़ लेते हैं। यहाँ के बाद कहाँ जा रहे हो? अरे जाओ वहाँ से ले आओ कुछ।
भाई फटाफट कूदते वहां से। अरे बॉल दे दे बाहर भेज दो किसी को बात होगा ना सब मैच पे मेरे को पता काला मंगा तो रखे हुए मेरे पूछ के सारे आउट करवाने हैं फिर जो आएगा तो ही पता चलेगा कर दो ना बॉल दे दो हमें वो सब अंदर आ जाएंगे फिर उतरेगा ना फिर दिमाग खराब हो अरे जाएगा। इसमें बॉल दे दे भाई अरे भाग के आ जा मुंह पे लगा तो दीजिए। हैं एक बॉल होगी एक भेजिए एक और दो भाई फोटो भेज मेरा तो ईमेल कोड नहीं बोले नहीं है तेरी ना मंगा लेंगे दीपक का दिक्कत है अगला मैच पे निकाल चला दो वो बोल रहे हैं मुझसे बनाएंगे दूसरा अरे एक लिए दो के लिए कर रहे हो क्यों मजा आएगा चला दो खिला देंगे मेट्रो देख बढ़िया फुटेज लेना होता है यहाँ से गंदा आएगा सनलाइट भी उधर से आ रही है निकल गई भाई ये नहीं भैया ये जो किसी केबल लगती है आगे कैमरामैन को बोलो फोकस करेगा हाथ मत लगाना लाओ उखाड़ चेक करो अगर मैं भाई हेलो बंदा आउट है यार बंदा आउट है भाई तभी तेरी शादी नहीं हो रही बंदे तेरे शौक ही है ये लाला बंदे ने गर्लफ्रेंड रखी भाई हमारा डाल छोड़ना तुम्हें चाहिए बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड की और क्या 5 साल से बॉयफ्रेंड हो तो फोन करता हूँ क्या चाहिए ये शौक होते तुम्हें पता ना कितने फोन करता तू माइक हाथ से उनके पास मैडम के पास दोनों के भाई है ना सिक्का दो सिक्का भारत माता वाला हाँ वही है स्टेल वाला हमें सिखा रहे हैं हम पैर कर लिया अरे ये कुछ नहीं करते हैं ये पूरी फिल्म है क्या इसके पीछे वाला डब्बा भेज अरे आगे का बेस्ट तो फॉलो Hello. And now it's a toss time. Third match of today between LPS Euphorians and the Indian Sunrisers. Yes, we have both the captains and our senior vice president of this TCC, Mr. Sanjay sir. Mr. Sanjay with us. That is the call by LPS Euphorians. And yes, Captain, what you gonna to do? We would like to field first. Any specific reason for that? क्योंकि आई थिंक बॉलिंग के लिए काफी अच्छी विकेट है एंड अब ड्यू भी खत्म हो गया है सो होपफुली वी आर गोना बी एबल टू डिस्ट्रिक्ट देम टू अ टोटल ऑफ 70-80 एंड चेज इट डाउन And any comments to sir? ऑल द बेस्ट बस And sir, he's saying 70-80. सर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट वी वुड लाइक टू फील्ड फर्स्ट एंड ड्यू खत्म हो गया है तो जब हमारी बॉलिंग आएगी तो ड्यू तो और भी ज़्यादा खत्म हो जाएगा और सूर्य देवता हमारे को प्रकाश देंगे सो बट देन ऑल द बेस्ट टीम ऑन द बेस्ट ऑन दिस डे whosoever perform well is going to win and we are going to play fairly right thank you so much Thank you, sir. So yes, sir. Well, all the very best to both the teams. It would be final, you know this thing.
So all the best once again to both the teams. Thank you, sir. So yes, sir. Thank you, sir. Such a wonderful words from Senior Vice President of TCC. So news from the center. It's LPS Euphorians has won the toss and they have elected to field first. Can we have Yash sir here? He's going to be the official of the next match. इसकी बैटरी जा रही है ऑफ है So the first over is done and dusted, just 3 runs coming off it. And the skipper himself, Kapil, bowling the first over. So likes to lead his team from the front. And I keep saying this, he's a street smarts player. And today didn't quite get going with the bat. And he knows that the players have been struggling with the timing. So didn't offer too much pace in his first over. Bowls it even slower, asking the batsmen to make their own pace, and just 3 runs given away in the first one. And this is a big total on the board. You'd have to say, going by how proceedings have been since morning, 106 more required, 11 overs remain. The good thing about this inning so far is Daring Divinians, they've been watchful. Yes, they haven't lost a wicket. They still have 11 overs to go about their target. And Lavish, meanwhile, will be bowling the second over of this innings. He's coming over the wicket. That's a good looking stroke. Plays it straight down the ground, but mid-on should cut it off. And not before they come back for the second. So 2 more runs added to the total. The score moves to 5. So that's something you've got to concentrate on, because we saw in the first over there were a couple of dot deliveries. It's another good shot towards the sweeper cover region, gets another single. And I'm afraid singles won't really do for Daring Divinians. They need a boundary. At least one boundary every single over from here on. That's a good shot. Pulls it away towards the onside. They thought about a single for a brief moment, decide against it in the end. That is an excellent attempt. Kudos to the fielder standing in close. But what a cast that would have been if he had held on to that one. Easy. Meanwhile, final delivery of the second over coming up. Vishal looks to swing it away towards the onside. Gets an under edge straight to the keeper. That's another dot. That's another good over. Just 4 runs coming off it. Second gone. Daring Divinians, they're 7 for no loss. So the problem with this kind of a target is that when you have the initial quiet overs, the required run rate just creeps up on you, and that becomes a problem. And then there's an added scoreboard pressure on you as well. And VSPK, they are the masters of putting the pressure on you as an opposition. Never give them an inch. They're also the masters of mind games. And, deservingly winning the championship last year, and would be hoping that they can retain the championship this time as well.
Meanwhile, start of the third over. That was a close call. Well, the fielders do ask the question. I think he's made it back. जी हाँ राहुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से फिनिशर्स ने पारी को फिनिश किया था ना, तो और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी आप कह सकते हैं। माइंड गेम की आपने बात की, चैंपियंस हैं तो कुछ तो डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस आपको बल्लेबाजी में तो दिखा है, लेकिन यहाँ गेंदबाजी अभी फिलहाल शुरू हुई है। लेकिन इस बीच एक अच्छा शॉट, लेकिन मिस फील्ड के चलते यहाँ पर थोड़ा सा Well, right, as you said, you might be the champions, but what matters is on the given day how you perform on the field. And Daring Divinians, at the moment, they are focused on this target. Looks to swing it out. That's in the gap. There's a fielder there. Fine leg. Keeps it down to just a single. They'll come back for the second. So another brace. So Dilip, the running between the wickets in this tournament, this is just the second game of the tournament we're witnessing, has been exceptional. And also the stamina of these players, they're putting in the hard yards, the big strides in, and sometimes you tend to forget that these are not professional cricketers. जी हाँ, आपने सही कहा, लेकिन यही तो खूबसूरती है इस खेल की, क्योंकि आप किसी भी एज में हो, क्रिकेट अगर आप एंजॉय करते हैं तो आपके लिए नंबर्स मैटर्स नहीं करता, और आप पूरा एफर्ट्स देते हैं, 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। वो आपको इस दूसरे मैच में भी दिखा है, रनिंग बिटवीन द विकेट। So yes, that's a beautiful point you made. You know, they've worked really hard, and they've worked on their fitnesses as well. All these players, they give their best on the field. And like you saw in the first game, when the players step on it, they're fierce rivals. That's a good looking stroke. Towards the mid-off region, gets a single. And the point I was coming to is, they are fierce rivals on the field, and once they step out of those ropes, they're the best of friends. And that's a few more runs for the batting team. So another couple of runs, and that's the end of the third. A good over that for the batting team. They're 17 for no loss. And testament to that is the point we were making is, in the first game, you saw that eventful final over when the team batting second were playing, and there was something that went amiss, and there were a few controversies in that particular over. But you know, they were very intense about that. They were very upset, you know, both the team captains, they were very upset with what transpired out there in the middle. But once they stepped out during the presentation ceremony, Sanjay sir, the captain, the first thing was, I mean, he congratulated his opposite number. And that just shows you what the essence of this tournament has been. You know, your fierce rivals, once you're out there in the middle, you battle it out, you don't give an inch. And once you're off it, you're the best of buddies, you care for each other. And that happens when you're out there, that fighting spirit, that fire is inside you. You're playing for victories for your team.
That is why I said when this tournament started that we are in for 4 exciting, exhilarating days of cricket here. The Divinians have been steady, but I believe that required run rate, they have to keep that in check. It's in and around 10, and it's moving towards 10.5 at the moment. 90 runs still required. Opening the face with the bat at the last moment, works it away towards the point region. They'll come back for the second. Brilliant running between the wickets. 2 more runs added. पटका हुआ ये गेंद गैप में, और राहुल भाई जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि आप एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, क्योंकि 109 रन आसान होने वाला है नहीं यहाँ से। और जिस तरह से सागर और लवीश के बीच जो साझेदारी हुई थी, कुछ उसी तरह की साझेदारी की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप शुरुआत अच्छी कर चुके हैं। 3.3 ओवर की बल्लेबाजी में महज 21 रन बिना किसी परेशानी के, और जो बल्लेबाज हैं पूरी तरह से बेहतर शॉट्स आपको देखने को मिले हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स जिसे कहते हैं ना वो, और रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करनी होगी यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, और जो साझेदारी है उस साझेदारी को आखिरकार तोड़ने में मिली है सफलता, और इसी के चलते फिलहाल शायद मेरी नज़र लग गई है। Yes, that was a suicidal run to begin with. Never was a second in there, but unfortunately the non-striker will have to depart. That is a wicket. The first wicket has fallen. Daring Divinians, they are 21 for 1 as Neha walks back after scoring 3 runs. Her stint with the bat has ended. So breakthrough courtesy a run out. And also they've lost a wicket. They've got 9 wickets in hand. We've still got a long way to go. Tarun is the new batter who walks out to the middle. He's at the non-striker's end though. And what every single dot ball does is create the pressure. And that builds the pressure as well on the batting team. विकेट मिला है, और अगले 4 से 5 ओवर ये दिशा निर्धारित करेंगे इस मुकाबले की, क्योंकि जिस तरह से फिनिशर्स के लिए मध्य ओवर्स का जो खेल रहा था, वो जो साझेदारी थी, उस साझेदारी ने एक नींव रखी थी, और जिस तरह से चांसेस लिए गए थे ना सागर के द्वारा, खासकर वो जो अर्धशतक, इस 6ठे सीजन का पहला तेज तरार अर्धशतक, उसी के चलते 108 रन बनाने में सफलता मिली थी। और ये 12 ओवर का खेल है। इक्वेशन की अगर आप बात करेंगे यहाँ से तो 87 रन 48 बॉल में, और विकेट आपके पास 9 पूरी तरह से सुरक्षित है। विशाल एक बाउंड्री की मदद से 17 रन 15 गेंदों में, और दूसरे छोर पर अभी अभी मैदान पर तरुण आए। बतौर गेंदबाज बेहतर रहा है प्रदर्शन, लेकिन इस समय ज़रूरत है बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने की। और क्या यहाँ से इस दूसरे मुकाबले में एक बेहतर, एक कांटेदार मुकाबले की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एक टारगेट मिला है, और वो जो टारगेट है वो इतना आसान होने वाला है नहीं। किसी एक बल्लेबाज को ये जिम्मेदारी उठानी होगी एक छोर से, और दूसरे छोर पर उसको मदद करने के लिए। And that was a very interesting shot that the batsman tried in the previous, in the final delivery of the previous over, because he knows there's a big gap there between fine leg and square leg. And the run rate has dropped below 6. The required run rate is in excess of 10.5 at the moment. Start of a fresh over. And starts off with a wide. One down the extras column. That the score moves to 23, and it's
Anil, who's a new bowler. Anil coming into the attack, bowling his first over. And just fires it in. He's an off spinner and bowls it flat and bowls it quick. Meanwhile, they get a single. Anil Singh Rawat, another vital cog in this VSPK team. As I said, they're playing 11. All of them count in. All of them make a difference to this team. Might be another wide. It is another wide. The second one already in this over. Not the best of starts as far as Anil Singh Rawat is concerned. And some easy runs here for the Divinians. They've lost 1 wicket, courtesy a run out. It's once again sensible from Vishal. He's done the bulk of the scoring. He's hit a boundary, 1 hit to the fence for Vishal. And the new man is Tarun. Tarun has faced just 1 delivery. And they really need to get a move on here. The daring Divinians. Rocks back onto the back foot. That was hit really hard. That's through the fielder. The fielder from sweeper cover. A rather deep extra cover. Comes in, keeps it to just 1. Once again looks to cut it late. A single is what they get in the end. So the scoreboard is ticking at a slow pace, but doesn't matter. What's important is you don't play too many dot deliveries. That's a good looking stroke. I love the way how he transfers his weight onto the back foot. Looks so stylish, so elegant. And just punches it towards that extra cover region once again and gets Vishal on strike to face the final delivery of the over. Vishal batting on 18 at the moment. Final delivery of the 5th coming up. And he's cleaned him up. He's cleaned him up. He was looking to do something different there. Backs off too much, and that was straight. That was fired in once again by Anil, and he's got a breakthrough. That's the 2nd wicket. A well-settled batsman has to go back, and daring Divinians slightly in trouble now. They're 29 for 2. पाँच ओवर 29 2 विकेट। और राहुल भाई ये मुकाबला ना फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में जब
फिनिशर्स बल्लेबाजी कर रहे थे ना तो रन्स आना शुरू हुए थे और तेज तर्रार रन्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी फंसी हुई या कहें अपने ही गेम प्लान में थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रही है इस समय. Yes, I think they really need to get a move on. What's important is, even if you saw the first innings, that middle phase, I think that's what's important in this game. That's a good shot, meanwhile, just as I say that, but won't travel towards the fence. So that middle phase, VSPK, they're very fluent. They made sure that they got at least one boundary every single over, and that's something that the daring Divinians need to do from here on, because that run rate is creeping up. It's almost 11 and a half now, in excess of 11 and a half rather, and they need to do something about it for sure. And if you ask me, this is the over. This is the bowler they'll be looking to target. And you can already see glimpses of that as Tarun looks to use his feet against the bowler, looks to work it through the gaps, but stroke making hasn't been easy today. सही कहा आपने, क्योंकि जब आपको तेज तरह रनों की दरकार होती है ना, या फिर आप तेजी के साथ रन बनाना चाहते हैं, तो आपको गति चाहिए, और वो गति अभी तक इस मुकाबले में देखने को मिली नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज कि किसी एक बॉलर को आपको टारगेट नहीं करना, आपको 2 या 3 बॉलर ऐसे सेलेक्ट करने होंगे जिस पर आपको रन्स बनाने ना, रन्स वो भी 15 से 20 रन अगर अगले 2 या 3 ओवर कंटिन्यूअसली अगर आते हैं ना, तो फिर दबाव बनेगा. और बढ़िया थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट आप तारीफ करनी होगी तरुण की, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, और ये जो फासला है ना वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, क्योंकि छठे ओवर की आखिरी गेंद आना भी इस ओवर से बाकी है, और आपको रन्स चाहिए, बल्क में रन चाहिए. हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्री अगर आप लेंगे ना, तो ही आप अगले 2 से 3 ओवर बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं. अगर उसमें रन्स नहीं आए तो फिर परेशानी हो जाए, क्योंकि जो इक्वेशन है ना वो बढ़ती हुई, वो जो डिफरेंस नजर आया ना पारी का, वो नजर आया है इस बीच. अच्छा शॉट, गैप में ये गेंद पीछे, खिलाड़ी पहला रन तेजी से मिसफील्ड के चलते दूसरा रन मिलेगा, और इस 2 रन के साथ फिलहाल यहां पर आधा सफर बढ़ता हुआ. और रनिंग बिटवीन द विकेट आप देखिए, 2 की जगह 3 जब तक गेंद वापस आती तब तक तीसरा रन यहां पर मुकम्मल किया गया. 6 ओवर के बाद 38, 2 विकेट के नुकसान पर. लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आधा सफर आपने तय किया, यानी 71 रन अभी आपको चाहिए. इक्वेशन अगर आप देखेंगे 71 रन 36 बॉल में, तो फिर किसी एक खिलाड़ी को ये टारगेट उठाना होगा, किसी एक खिलाड़ी को जो जिम्मेदारी है वो लेनी होगी. और आप किस गेंदबाज को टारगेट करते हैं, क्योंकि अगले 3 ओवर यानी 18 बॉल्स में अगर ये फासला आपने कम नहीं किया तो कुएं की जगह ये खाई हो जाएगा, और फिर आपके लिए मुश्किल होने वाला है. Yes, that's a very valid point that you make, because now it doesn't matter. Now just 6 overs remain. The required run rate is in excess of 11 and a half, and you've got to go all guns blazing from here on. Last 6 overs, and I believe 71 to get. If you talk about the equation, it's 71 of the next 36 deliveries. So will be tough, but they. बढ़िया शॉट, और लीजिए यहां पर जिस तेजी के साथ गेंद गया था, लगा था कि शायद थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आज इंपैक्ट प्लेयर की अगर आप बात करेंगे ना, तो यहां से सागर बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज पहली गेंद पर विकेट. क्योंकि बतौर बल्लेबाज शानदार 60 रनों की वो पारी, और अपने पहले स्पेल की पहली गेंद पर ये विकेट. Astounding reflexes. Coming in, bowls a sharp delivery. That was quick as well, and that was coming towards him. And talk about reflexes. He was so calm, and he cups it safe as a house there, the bowler Sagar. He's done it with the bat, and now with the ball, immediately picks up a wicket. What a match he's having. बिल्कुल, क्योंकि चैंपियंस टीम की अगर आप बात करेंगे ना, चैंपियन टीम्स की अलग ही एक निशानी होती है. अगर आप पहली इनिंग देखेंगे ना, जब फिनिशर्स बल्लेबाजी कर रहे थे खासकर मिडल्स ओवर्स में,
तो डॉट बॉल्स बहुत कम थी, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर था और अटैक किया था। और वही अगर गेंदबाजी की तरफ आप देखें तो रोटेशन अच्छा है, और ना केवल रोटेशन अच्छा है बल्कि जो प्लान बनाया गया था कप्तान के द्वारा उसको बेहतर तरह से एग्जीक्यूट किया है, नॉट ओनली ऑन पेपर बट ऑन द ग्राउंड। क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली विकेट निकालते जा रहे हैं और रन्स आपने उतने दिए नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप अभी वीक पॉइंट देखें ना टीम का, जो बल्लेबाजी कर रही है उसके लिए मुश्किल है कि उनके लिए रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी बेहतर हुई नहीं जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे। 109 रनों का टारगेट 12 ओवर में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बट सवाल है कि जो बल्लेबाजी है ना वो उस लेवल पर गई नहीं है अभी तक जिस लेवल पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट में। Meanwhile, he's cleared him up. Rather, Draupadi it is who has to walk back. She goes for a golden duck. Pinpoint Yorker. Nothing any batsman could have done in that delivery. That's another one in this over. And Sagar picks up 2 here. That's a very valid point that you make. I mean, as I said, all these teams, they know each other inside out, and I'm sure in the off season they've prepared their plans, and you've got to stick to your plans at times. Sometimes it might not go your way, but what's important is that it's a hard and fast rule in cricket that you stick to your plans. You give it the benefit of the doubt as well, because it might misfire at times. But what VSPK have done. और ये बाकी टीमों के लिए भी एक मैसेज है कि यस वी आर द चैंपियन एंड वी प्ले लाइक अ चैंपियन। Yes, that's absolute championship material that you're witnessing. Could be another wicket. I think it is another one. The umpire raises his finger at square leg, and the Divinians, they've lost half their side. They're 40 for 5. And it's to be seen who has to depart. I think it's Rajesh. How unfortunate is that? Without opening his account, or without facing a single delivery, he has to walk back. And they're reeling at the moment. They're 40 for 5. What an over this is. ये प्रेशर है, यही प्रेशर है। और जो गेम प्लान बनाया गया ना बतौर फील्डिंग टीम, फील्डिंग साइड, अरे इनका गाना है कोई? इनका गाना है क्या? फिनिशर्स का? फिनिशर्स को भी गाना दिया है आपको? So this is the 7th over. The skipper walks out to the middle. The skipper walking in at number 7, the crucial number 7 spot belongs to the skipper. He'll be facing his first, but at the moment Sagar is absolutely breathing fire. Oh, that's full. That could be another run out. Fumble by the keeper. He's off the mark straight away. Off the mark with a single. Mokshita now, she'll be facing her first delivery. Rather, she's faced one delivery. She's yet to get off the mark. But that run rate really creeping up. It's approaching the 13s now. This is a 7th over. What a fantastic over this has been. He's been full, he's been straight, he's been quick, and that could be another wicket. Puts in the dive. That was a desperate dive, but has he made it? He hasn't, says the umpire. That's another one. They've lost their 6th. Another wicket in this over. Would you believe it? They're 41 for 6. As the skipper might have to depart. He has to depart.
जी हाँ, गाने की तरह आज फिनिशर्स जो हैं इस मुकाबले में प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि 41 रन 6 विकेट और ये जो रन आउट हुए ना, ये कहीं ना कहीं इस मुकाबले में एक सीख देकर जाएंगे आपको, क्योंकि आप शुरुआत हुई है इस टूर्नामेंट की सीजन 6 का ये दूसरा मुकाबला। थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन इस परेशानी से आप निकल सकते हो और इस खेल की यही खूबसूरती है कि उतार चढ़ाव आपको राहुल भाई बहुत देखने को मिलेंगे। और इस डॉट बॉल के साथ फिलहाल 7 ओवर पूरे होते हुए 7 ओवर 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो 68 रन की दरकार आखिरी 5 ओवर बचे हुए 4 विकेट यहां पर हासिल किए जाते हैं, या फिर कोई करिश्मा, क्योंकि अनिश्चितताओं का ये खेल, कभी भी कुछ भी कहा जाना थोड़ा जल्दबाजी हो जाता है। लेकिन 30 गेंदे 68 रन, एक ऐसी पारी जिस पारी में थोड़े से जो रन है वो तेज तर्रार तरीके से है, लेकिन सवाल है कि बचे हुए 4 विकेट किस तरह से यहां पर करते हैं बल्लेबाजी, क्योंकि हार के साथ कोई भी टीम किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और थोड़ा सा यहां पर गेम प्लान, अगर आज कुछ दुर्घटना होती है, कुछ रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता, लेकिन टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आपके पास समय रहेगा एक बार फिर से खुद को बैक करने का, बाउंस बैक करने का मौका, क्योंकि शेर जब घायल होता है तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। Yes, absolutely. And uncertainty is the second name of this game. Never say never in cricket. Mokshita, she's the batter on strike. And the umpire has raised his finger. Another wicket has fallen. The batter was outside her crease. And falling like 9 pins here. The daring Divinians. So jersey number 17 is the new batter who walks out. Comes in at number 8 rather. And, talking about the fall of wickets, that previous over was a roller coaster ride. 2 wickets coming off it. Also 2 run-outs as well. So every single delivery was an event in that over that Sagar bowled. And till that point of time, daring Divinians, they were going along nicely. It was all smooth. They had 8 wickets in hand, and all of a sudden they lost 4 wickets in that particular over. Meanwhile, another run out, another wicket, and they've lost their 8th. It's going from bad to worse for the daring Divinians. They are 41 for 8 now. That's another run out. That's a record number of run-outs in an innings. वाइड के साथ फिलहाल 1 रन का इजाफा यहां पर होता हुआ और लगातार गिरते हुए विकेट। जो सोच थी ना, उस सोच के तहत गेम प्लान उतना बेहतर तरह से एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके पास मौके अभी हैं। टूर्नामेंट शुरू हुआ है और जहां गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप चाहेंगे अगली बार रिपीट ना हो, क्योंकि फिर इस टूर्नामेंट में बने रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फिनिशर्स बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला, 109 का लक्ष्य मिला और उसके बाद शानदार गेंदबाजी, और तारीफ करनी होगी यहाँ पर ना केवल खिलाड़ियों के बल्कि कप्तान की। एक मैसेज दिया था
जब बल्लेबाजी कर रहे थे विकेट गिरे जरूर, लेकिन वो साझेदारी जो रही खासकर लोविश और सागर के बीच, वो अर्धशतक जिसने थोड़ी सी स्पीड दी यहाँ पर, और उस स्पीड के बाद यहाँ गेंदबाजों के पास एक मौका था, मनोवैज्ञानिक बढ़त जिसे कहते हैं ना, एक दबाव के तहत आप शुरुआत करते हो और लक्ष्य का पीछा करना कभी भी आसान नहीं होता है। चेज करना आपके लिए आसान होता नहीं है, चाहे लोएस्ट टोटल हो या फिर हाईएस्ट, आपको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि विपक्षी टीम पूरे रन्स बना चुकी है और उसको आपको चेज करना है। और ऐसे में अगर शुरुआत अच्छी ना हो तो और ज़्यादा परेशानियां बनती है। लेकिन 8 ओवर यहाँ पूरे होते हुए 8 ओवर में 43 8 विकेट के नुकसान के बाद, और दबाव फिलहाल ज़रूर होगा लेकिन अभी मुकाबला समाप्त हुआ नहीं है। 4 ओवर अभी आप मान के चलिए यहाँ से बचे हैं और 24 बॉल 66 रन। क्या यहाँ से कुछ करिश्मा हो पाएगा? और कहीं भी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। राहुल भाई, अगर आप इस समय तुम्हारे डर से So VSPK, something that they've done is they've tied down the opposition batters and they kept things really simple. It's been like fire and ice as far as this bowling performance is concerned. Why I say that is, you know, initially we saw that the slower bowlers of VSPK didn't give any pace for the opposite batsman to work with. Whereas, oh, that could have been another wicket. Good effort by the wicketkeeper. Whereas the faster bowlers, they were absolutely breathing fire. They were hell-bent quick. So that's why I said it's been more of a fire and ice performance by VSPK. It's either too slow or too quick for the opposite numbers, and nothing medium. And they've been really clinical throughout this innings. Final delivery of the 9th coming up. And what an over this has been. Another splendid over by Anil Singh Rawat. 9th gone. And Divinians are still struggling. They're 43 for 8 with 3 more to go in this innings. And look at that required run rate. At the moment, looks unachievable. 22. So 2 wickets remain. And Divinians, in my opinion, they need to forget this match. And, you know, this tournament is, there's still a long way to go in this tournament. You know, sometimes these things happen. You need to get it out of your system. And you need to start afresh in the next game. Because they are a quality side. It's day 1, as I said, early jitters of the tournament. Bowler running in. That was an interesting delivery. And the batsman somehow missed it, all ends up. Expected any sort of signal from the square leg umpire, but not to be. He was unmoved. That ball was dipping, you'd have to say. Looks to play the sweep shot towards the onside. Slight fumble by the fielder, but not the biggest of mistakes. No chance of taking a single there. This is the 10th over. Good start by Kamal Kaushik. All their bowlers have struck to their lines pretty well. And look at that. He's varied his pace so nicely throughout this over. And Man Singh is struggling out there at the moment. This has been a painful ordeal for him. 9 deliveries. He's got a single. And look at that for an effort. Oh, that is suicidal once again. That could be another run out. What are they doing? Another run out in this innings. I'm sure this is a record. What have we witnessed? 5 run outs in this innings? Probably 9th wicket down, and they're 44 for 9. Daring Divinians now.
So it's not a scorecard that the daring Divinians would like to have a look at, especially considering the fact that there have been 6 runouts in this inning so far. That's dreadful. Was looking to move out of the line of the delivery. I think he's been hit on the legs. And that is the end of the 10th. That's another good over for the bowling team. And I reckon Anil Singh Rawat has bowled a maiden as well. And he'll be bowling the 11th. And daring Divinians at the moment, they're reeling their 44 for 9 with just one more wicket left in this innings. And it's really not been their day. So the final 2 overs. Rajni, she'll be facing her first delivery. And the 11th one, the mandatory female over. Swings it hard, not too far away from the fielder. Is that another run out? Just about misses it. Had a shy at the stumps. Could have been the 7th run out in this innings. Gets away with that. The batter, she's off the mark. Rajni straight away. And Man Singh back on strike, batting on 2, has faced 11 deliveries. I think the writing is on the wall here. Looks to swing it away towards the onside. Swing and a miss. That's another dot. I think we're just going about with the proceedings here. The penultimate over being bowled. Man hits it straight. The fielder is giving it the chase. That's an excellent effort. Had a lot of ground to cover. Gets around it. I think he's tied him to just 1 there. So that's just a single in the end. So brilliant effort by the fielder. Cross-batted heave towards the mid-on region. And that's another run out. That is another run out. That is history for sure. 7 run outs in an innings. And that's it. They won this one with 62 runs. What a massive victory. Clinical performance by VSPK. They've shown once again why they were the champions last year. And they are here to retain the trophy.
क्या गेम को रोक दो मैं गेम थोड़ी रोका रहा हूँ। क्रिकेट में नया सिग्नल आएगा अरे मैं गेम थोड़ी रुका वाला वाह यार चलाओ भाई परमानेंट चलाओ परमानेंट क्या खुद ही बोलेगा हाँ 20 बाद मौजी ब्रेक ले लो बेटा उम्र कितनी तेरी उम्र तो ज़्यादा होती कितनी है बुढ़ापे में सारी बात कितनी उम्र है अरे उम्र तो क्या 20 साल को ना 20 साल को 20 साल का है ना 20 से ऊपर हो है ना जैसे 5 होली है 10 दुखी है जब 5 होली तो देखी ना ये 5 दिवाली तो फालतू देखी मैंने
मैं तब खड़ा हूँ, मैं अगर पी रहा हूँ ना बिना बोले की तो पी रहा हूँ। उसको भूख लग रही है भाई जबरदस्त, हमें थोड़ी लगी है। 5 मिनट खाने को मिलेंगे, अच्छी बात है ना, लेनी चाहिए खाने के 5 मिनट भी नहीं। इससे भाव बढ़ चुके हैं। मैं खाता नहीं हूँ स्टेडियम पे। तो ये तो घर से लाया है, घर में तो खा काम करने आया हूँ। और यहाँ पे कुछ मिल जाए फिर तुम वो लाते ना बिना प्याज खाना तो खाना है, तो भूखा पेट को भी खाना है। मैं नहीं खाता खाना, छोटा भाई नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता भैया, ये कितनी बार खाते मेरा खाना। नंबर उल्टा भी लगवाया इसमें, उनको पड़ेगा भाई भाई हाँ टीम को बुला रहा हूँ। Attention please, can I have the teams of Daring Divinians and VSPK finishers near the banner for the presentation ceremony? ये बालाजी के भक्त है ना। अच्छा, लहसुन का कुछ नहीं। बाहर एक बैठ होता क्या है मम्मी, वो भी नहीं खाता, होता क्या है ये? इसके चक्कर में भी खाता हूँ। बढ़िया बे, बहुत बढ़िया सब्जी लगती है लहसुन प्याज की। नया जनता है ना, जनता का स्पेशल पनीर बटर मसाला। कहाँ पे विद गार्लिक सादरा सादा कितनी देर ज़्यादा कल लेके आना मैं कल कैसे सर लेकर सबने कर लिया लंच यहाँ पे? रात को रेडी है, रेडी रात को लेकर रख लो, सुबह फ्रिज में लगा कोई दो, रहता है? सबका हो गया राहुल ने कर लिया। जी। हाँ हो गया भैया आप लोगों का लंच हो गया? लेने गई हूँ मैंने। आ जाओ, स्कोरिंग करो। बता दो दिल की बात बता दो, तो मैडम बोल रही है तो
इतनी तेज बोला फिर भी नहीं सुना होगा। मैच स्टार्ट हो गया भाई सर, मैच स्टार्ट हो गया सर। वो टीम पहुंच गई सर, वो काम वो दिखाना होता है सर, टीम लग रही है। आज मैं तेरे को शाम को सारी चीज लिख के दूंगा कि ये काम करना है। नहीं नहीं, ओए जब दूसरा जन्म लेगा जब लिखवाइयो। अभी दूसरा मैच हाँ ओके ओके ओके। डे इंडियन का कैप्टन पता है क्या कौन है? बेकार